Dear student, good morning to all of you. Today we discuss here the next reactions of a alkyl halide. It means reactions of a alkyl halide with active metals. You know, active metal means what? It means those metal which easily react to alkyl halide called as the active metal. Some active metal like that of magnesium, sodium, and cadmium. These are three what we can say the metal which react easily to the alkyl halide to form the different product. Clear? It means when any metal like that of magnesium, sodium, or cadmium is react with a what alkyl halide, it form the organometallic bond. What is organic means what? Means containing carbon. So R indicate organo. This R indicate what here? Organo, and Mg indicate metal. So it is called as organometallic bond. It means the bond in between the carbon and magnesium or carbon of any metal called as which bond here? Organometallic bond. And the compound is formed called as organometallic compound. What here? Organometallic compound. It means a compound which contain organic substance as well as the metal called as the organometallic compound. Clear? So when active metal like that of what here? Magnesium or what? Sodium and cadmium react with the alkyl halide, it form the organometallic bond, and the compound is formed is called as the organometallic compound. It means the compound which contain organic substance or organic compound as well as what here metal, so it is called as the organometallic compound. For example, RMg, R indicate the organic compound, here the Mg is called as what? The metal. Clear? Now we take the reaction with, in this topic we take the first active metal what? Magnesium. So magnesium is react with a alkyl halide. So you know Rx called as the alkyl halides. Clear? So when the alkyl halide is react with a magnesium, so what we get? We get a alkyl magnesium halide. What we get here? It is also called as organometallic compound, or third name, it is also called as the Grignard reagent. The word Grignard is a name of scientist. He first of all prepared a RMgX complex, so it is called as the Grignard reagent. ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. What is the formula of Grignard reagent or organometallic compound? What here? RMgX complex called as what here? Grignard reagent or organometallic complex or alkyl magnesium halides. Clear? So in this reaction, the active metal like that of magnesium is react with alkyl halide. It means we say हम लोग केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं बेटा कि किसी भी अल्किल हैलाइड से अगर एक्टिव मेटल को रिएक्ट किया तो इसमें क्या आपका प्रोडक्ट आएगा. ठीक है. सो व्हेन द अल्किल हैलाइड, दिस कॉल्ड एज द अल्किल हैलाइड, क्लियर, is react with a magnesium metal, active metal, in presence of dry ether, it form the RMgX complex. It means the bond in between the Rx is breaking and Mg attached in between the Rx. So what we get? RMgX called as the alkyl magnesium halide or Grignard reagent. Clear? Now these alkyl magnesium halide or Grignard reagent, clear, is react with some water molecule or any compound which contain hydrogen atom. इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि वाटर से रिएक्ट होगा या फिर जिसमें जो कंपाउंड में H है, क्योंकि ये कंपाउंड हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए वो इजीली वाटर से जो है तो रिएक्शंस करेगा और वो कंपाउंड से रिएक्शन करेगा जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस है. ठीक है. सो this RMgX is react with a water molecule or any compound which contain hydrogen. So here this CH3OH means methyl alcohol contain hydrogen. So hydrogen is react with R. So what we get? RH. RH called as what here? It form the hydrocarbon. What form here? Hydrocarbon. And remaining part we get a complex. It means MgX breakdown. MgX attached to what here? Attached to the CH3O group. So what we get? We get MgX-OCH3. It means only H attached to R, we get hydrocarbon. Same here, the RMgX called as organometallic compound or alkyl magnesium halide or third name Grignard reagent is a react with ammonia. Ammonia also contains hydrogen. So one H of from the ammonia is attached to R. What we get? We get also the hydrocarbon is RH. Plus remaining complex we get here Mg attached to X and NH2 remaining. Clear?
So in this way, the active metal like that of magnesium, sodium or cadmium is reactive with a alkyl halide. It always form the RNGX complex called as organometallic compound or alkyl magnesium halide, or third name is called as what here? Grignard reagent. The RNGX called as what? The Grignard reagent. The word Grignard means a name of scientist. He prepared reagent called as RNGX. So name is called as alkyl magnesium halide or Grignard reagent. Clear? Now next here B, Wurtz reaction. The name scientist called Wurtz reactions. So this scientist Wurtz is first of all prepared a reaction. The name reaction of the given reaction is called as Wurtz reaction. जो reaction से prepare किया था उसको नाम क्या दिया उसने? Wurtz reaction. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. एक्सप्लेन और राइट ए शॉर्ट नोट ऑन Wurtz reaction, और how the sodium metal is react with alkyl halide, what we get a product, so on. Now first of all we take the statement. What is the Wurtz reaction? So when any alkyl halide, it may be symmetric alkyl halide or it may be unsymmetric alkyl halide, or it may be one molecule alkyl halide or two molecules, different molecule of alkyl halide is react with sodium metal, in presence of dry ether. In presence of dry ether, it form the hydrocarbon or it form the alkane. What form the especially alkane called as Wurtz reaction. In simple here, these two are we take as it is RR, and remaining part will be lost as a byproduct twice Na. How many X? 2X called as twice NaX will be lost as a byproduct. What we get? RR. RR called as hydrocarbon, especially called as the alkane. Why? Because R it may be alkyl group. It is group may be methyl, ethyl, depend upon the carbon. So we take the example of this given reactions. Same here. It is general reactions. We take the example here first. So when twice CH3Br means what here? Twice CH3 means methyl bromide. R replaced by what? CH3. How many CH3? 2. Why? Because we take 2R here. So twice CH3Br means methyl bromide is a react with sodium metal. Same here. What? Here the X replaced by Br. So what we lost? We lost a twice NaBr. Remaining how many CH3? 2H3. We take the CH3 single bond CH3. It is called as what here? C2H6 means ethane. It is a member of alkane called as the ethane. Why ethane? Because this compound contains C2H6 is a molecular formula. Means contain carbon 2 and 6 hydrogen. It is called as the member of alkane called as what here? Ethane. It means when the methyl bromide, 2 molecule methyl bromide is react with sodium metal in presence of dry ether to form the what? Ethane or hydrocarbon or alkane. ठीक है. Second example of same reaction, Wurtz reaction. What? We take the ethyl bromide. Okay. यहाँ पे क्या लेते हैं? methyl लेते हैं, ethyl लिए बेटा यहाँ पे. Change the what here? Group. वहाँ CH3 लिया था example में, यहाँ C2H5 लिया. Same. इसका याद रखना है बेटा, कितना भी क्वेश्चन के अंदर उन्हें मतलब क्यूज किया तो आपको याद रखना है रिएक्शंस कौन से आइटम पे हो रही है. सोडियम मेटल एक्स को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, और जो रिमेनिंग जो CH3 वो आपस में क्यों अटैच हो रहे हैं. प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बनता है इसका? हाइड्रोकार्बन कॉल्ड एज अल्केन. रिएक्शंस कैसे भी हो, सिर्फ आपको समझने का रिएक्शन से कौन से एंड पर जो है तो रिएक्शन हो रही है, कौन से प्रोडक्ट मिल रहा है और कौन सा बाय प्रोडक्ट निकलता है. ठीक है. So here we take 2 C2H5Br. Same here. Here the twice NaBr loss. Why? Because twice Br. So we lost a twice Na and how many Br? 2 Br. We get a twice NaBr loss. Remaining part here. How many carbon? How many carbon we take here? 2 into 2, 4. So 1, 2, 3, 4. How many hydrogen? 5 into 2, 10. So 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. It means it form the butane. Why? Because it's a ethyl bromide. We get what here? The butane as a hydrocarbon or alkane. Member of alkane called as butane. Why? Because it contains a carbon 6. Sorry, carbon 4. Hydrogen how many here? Hydrogen how many here? 10. ठीक है. So in this way we prepared always a alkane from the Wurtz reaction. Now next example of Wurtz reaction. If the reactions in which what here the two different what alkyl halide is used. यहाँ सभी एग्जांपल फर्स्ट सेकंड कौन से है? सेम alkyl halide यूज किया, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड एग्जांपल है उसमें क्या यूज किया गया बेटा? डिफरेंट alkyl halide. Why different? Because both two group are different. Here we take the CH3Br. It's called as methyl bromide.
ये जो है तो मिथिल ब्रोमाइड है, ओके। और इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इथिल ब्रोमाइड। बोथ ग्रुप आर डिफरेंट। सो व्हेन, अब इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा फिर हमको, अगर क्या हुआ इसमें देखो, व्हेन द मिथिल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद इथिल ब्रोमाइड, बोथ ग्रुप आर डिफरेंट, सो इट गिव अ डिफरेंट प्रोडक्ट। इफ वी यूज अ सिमिलर अल्किल हैलाइड in the Wurtz reaction, we get only one product. If a two different alkyl halide used in the Wurtz reaction, we get a different product, depend upon the carbon atom. So now, when the methyl bromide is react with ethyl bromide, and these react with active metal like sodium metal, it produces a dry ether. We get a three product, depend upon the what here the carbon. First of all, we get a ethane. Why ethane? Because दिस CH3Br फर्स्ट मॉलिक्यूल है ना, आपको इस पर रिएक्शन करनी सोडियम मेटल की। सो इसको सपोज करना ट्वाइस, देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, ट्वाइस CH3Br सपोज किया इसको, और यहाँ पर ट्वाइस CH3Br सपोज किया, ये सोडियम मेटल से रिएक्ट किया उसको फर्स्ट मॉलिक्यूल को। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल मींस ट्वाइस CH3Br इज रिएक्ट विद ट्वाइस Na, इज रिएक्ट विद ट्वाइस Na. So what we get? Same here, we lost a twice NaBr. We lost a twice NaBr. Remaining part, what here? Reactions CH3Br पर क्या याद रखो, when this CH3Br is reacted twice Na, what we get? Loss of twice NaBr, and remaining part here, how many group is remaining? Twice CH3 means this one called it twice CH3. This called as what here? How many carbon? C2H is called ethane. It's the first product. Second, what here? When these two are combined, it means we take as a this like that of this. So when these two are combined, okay, so what we get? Same here, we lost our twice NaBr. How many? This one Br, this one Br. सेकंड कैटेगरी बता रखो, फर्स्ट में एक पर ही रिएक्शन हुई, याद रखो, ठीक है। सेकंड में रिएक्शन क्या हो रही है बेटा, बोथ मिथिल ब्रोमाइड एंड इथिल ब्रोमाइड आर रिएक्ट with a sodium metal and presence of dry ether. So in these reactions, there's first of all twice NaBr are lost here, twice NaBr are lost. Remaining part are joined together. So this CH3, okay, so this CH3, okay, remaining part here what? So we take here this CH3, okay. The next, how many carbon? 2 carbon and 5 hydrogen. So we take this 1, 2 carbon. How many hydrogen? 5. 3 plus 2, 5. So when these two methyl bromide or ethyl bromide is react with a sodium metal, we get a propane and loss of sodium. What here? Bromide. ठीक है. Now third condition here. So we take the twice CH3Br. It means we get here twice CH3Br and here twice C2H5. So what we get? We get here the butane. What we get here? Butane. Okay. How many carbon? 1, 2, 3, 4. ठीक है. अब रिएक्शन को कैरी ऑन करते हैं बेटा, पे देखो, ठीक है, ट्वाइस CH3Br प्लस ट्वाइस C2H5Br ट्वाइस Na. नाउ सेम हियर, द ट्वाइस NaBr आर लॉस्ट, ट्वाइस NaBr आर लॉस्ट, रिमेनिंग पार्ट हियर व्हाट, हाउ मेनी कार्बन? दिस 2 plus 2 4. सो दिस 1 2 3 4, क्लियर, 1 2 3 4. हाउ मेनी हाइड्रोजन? व्हाट हियर? 5. दिस व्हाट हियर? 6 3 into 2 6. 6 plus 5, what we take here? 11. ठीक है. So we balance these reactions. What we get here is 3 plus 2, 3 plus 3 6, 6 plus 4, what here? 10. So in this way we get a product. What here? CH3, CH2, CH2, CH3 plus loss of twice NaBr called as the butane. Clear? Okay. So it's a product of a given reactions. Okay. Now third here, reactions of haloarenes. ये डिफरेंट टॉपिक है, ओके। अभी हमने क्या देखा था? रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल में मैग्नीशियम देखा, उसको रिएक्ट किया तो उसका प्रोडक्ट क्या बना? RnGs कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट बी इसमें देखा, एक्टिव मेटल इसमें यूज किया, लेकिन रिएक्शंस का नेम क्या दिया? वुड्स रिएक्शन। उसमें हमने अलग अलग कैटेगरी देखा, अगर सिमिलर अल्किल हैलाइड यूज करा तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, अगर डिफरेंट अल्किल हैलाइड यूज किए तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं हमको। वो आपको रिएक्शंस को बैलेंस करके समझना है, ठीक है। नाउ वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक हियर, रिएक्शंस ऑफ haloarenes. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज haloarenes? Haloarenes means a remove of hydrogen from arenes. Arenes called as the benzene. Okay.
सो रिमूव ऑफ H फ्रॉम द बेंजीन द प्रोडक्ट कॉल्ड एज हेलोअरीन्स, यानी जो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है C6H6 है, तो वहां से अगर H रिमूव किया, ठीक है, और वहां पर X ऐड किया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C6H5X। दिस C6H5X called as a haloarenes. Halo means halogen X, arenes called as the C6H5 come from the benzene. So we take the reactions of haloarenes. It means haloarenes are used. यहाँ पे क्या यूज किया, haloalkane. It is example of haloalkane और alkyl halide. It is example of what here? हमारा जो टॉपिक है उसका नेम क्या है, हेलोजन डेरिवेटिव्स। उसमें दो टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। तो हेलोअल्केन्स हमारा पूरा फिनिश हो गया, ये हेलोअल्केन्स है पूरे यहाँ तक। हेलो मींस हेलोजन, मतलब X मींस Br एनी ग्रुप ऑफ, और दिस CH3 कॉल्ड अल्केन्स कॉल्ड हेलोअल्केन्स। अब रिएक्शंस क्या देख रहे हैं हम लोग, हेलोअरीन्स। दिस हेलोअरीन्स मींस halogen attached to benzene called as haloarenes. So we take the benzene is a what arenes and the Br called as what here the halogen. So it is called as the haloarenes or aryl. इसका और नेम होता है सेकंड aryl halide और Br called as bromide. So when what is the reaction of haloarenes? This is also called Wurtz fitting reaction. Wurtz fitting reaction. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Explain the Wurtz fitting reaction. एक्सप्लेन द वुड्स फिटिंग रिएक्शन। उसमें चेंज है बेटा, वहां पर क्या यूज किया हमने, याद रखो बेटा क्या चेंज है इसके अंदर। यहाँ पर यूज किया अल्किल हैलाइड और हेलो अल्केन, यहाँ यूज करे अरिल हैलाइड्स, ये दोनों में चेंज है, ठीक है। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? सो व्हेन द अरिल हैलाइड्स और सेकंड नेम अरिल ब्रोमाइड और बेंजीन ब्रोमाइड इज रिएक्ट विद अल्किल हैलाइड कॉल्ड एज द मिथिल ब्रोमाइड, called as the methyl bromide and sodium metal. In presence of dry ether, it form the substituted aromatic compound. It means any aromatic compound which contain any substituted group. It may be any CH3 group or any group called as the aromatic substitute. मतलब क्या, addition. यानी aromatic compound मतलब बेंजीन, उसके ऊपर कोई भी ग्रुप ऐड जाएगा, उससे बोलेंगे क्या, substituted aromatic compound called as Wood-Fittig reactions. Now we take the example. This methyl bromide or aryl halide is react with methyl bromide. When the aryl bromide is react with methyl bromide in presence of sodium metal, we get a substituted aromatic compound name called as, the special name called as methyl bromide or special name called as toluene. If a benzene attached to CH3, special name called as toluene or common name called as methyl benzene. It is called as Wurtz fitting reaction. Reaction कैसे देखो बेटा, यहाँ पर here this Br and this Br and this twice Na are used as twice NaBr and the remaining CH3 is attached to this benzene carbon. यहाँ पर या यहाँ पर अटैक कर, कहीं पर अटैक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे करो या फिर यहाँ पे अटैक करो, यहाँ पर भी किया तो चलेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी किया तो चलेगा। इसको दो तरीके, यहाँ पे अटैक करो, यहाँ फिर यहाँ अटैक करो, जो अटैक करना अटैक कर सकते हैं हम। कॉल्ड इज व्हाट हियर, टोलिन और मिथिल बेंजीन। सो इट इज कॉल्ड वुड्स फिटिंग रिएक्शंस, ठीक है, क्लियर है। दोनों में चेंज है बेटा। व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? व्हेन द अल्किल हैलाइड इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। इसकी इसमें चेंज क्या है, इसका नेम भी क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें चेंज क्या है, इसमें हेलोअरीन यूज करें हम लोग। व्हेन द हेलोअरीन कॉल्ड एज द aryl halide or bromide is react with a aryl alkyl halide or methyl bromide and sodium metal। मतलब इसमें दोनों में चेंज क्या है, दोनों वुड्स रिएक्शन में चेंज क्या है कि पहले इसमें अल्किल हाइड भी यूज कर रहे हैं और सोडियम मेटल भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या है, इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, aryl halide और बेंजीन ब्रोमाइड। इसलिए इसका नेम क्या है, हेलोअरीन्स रिएक्शंस और वुड्स फिटिंग रिएक्शन।